That one question. If sec theta plus tan theta is equal to P. Sec theta plus tan theta is equal to P. Show that P square minus 1 divided by P squared plus 1 is equal to cos theta. Is equal to, sin theta. Is equal to sin theta. लास्ट क्लास में एक रिलेशनशिप लिख के दिया था मैं. अगर कोई भी क्वेश्चन में sec theta plus tan theta is given, then Suyasha, what is the value of sec theta minus tan theta? Sec theta plus tan theta is given. What is the value of sec theta minus tan theta? Weber? What is the value? It's the wrong answer. Ayush Hemant. Sec theta plus tan theta is equal to P given. What is the value of sec theta minus tan theta? Yes, very good. 1 by P, reciprocal. Sec theta plus tan theta and sec theta minus tan theta are reciprocal. मैं लास्ट क्लास में लिख कर दिया था ना, ये कौन सा आइडेंटिटी यूज करके देखो, sec squared theta minus tan squared theta is equal to 1. Now we can apply the identity sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta equal to 1. From this equation, what is sec theta minus tan theta? That is equal to 1 upon sec theta plus tan theta, because one is the reciprocal of the other. If sec theta minus tan theta is given, we can find the value of sec theta plus tan theta because both are reciprocal. Same way, if sec theta plus tan theta is given, we can find the value of sec theta minus tan theta because both are reciprocal. One is the reciprocal of the other. Clear? One is the reciprocal of the other. Same way, another relation is cosec square theta minus cot square theta. In that case also, cosec theta plus cot theta and cosec theta minus cot theta are reciprocal. Last class में वही लिख के दिया था, मैं याद है? Clear? Now, what is the value of sec theta plus tan theta? P. So 1 by P. Now add this equation. This is equation 1 and this is equation 2. Add equation 1 and 2. So it is sec theta plus tan theta plus sec theta minus tan theta is equal to P plus 1 by P. Tan theta cancel. 2 sec theta. Take LCM. P squared plus 1 divided by P. P squared. Cross multiplication. P into P. P squared plus 1 divided by P. What is the value of sec theta? Sec theta is equal to P squared plus 1 divided by 2P. ये भी प्रूव कर सकते हो. Sec theta is equal, ये भी आ सकता है एग्जाम में. Prove that P squared plus 1 divided by 2P equal to sec theta. कोई भी आ सकता है. इसमें sin theta पूछा है. Cos theta भी आ सकता है. Sin theta भी आ सकता है. Tan theta भी आ सकता है. और cot theta, sec theta, cosec theta कोई भी आ सकता है. मेन तो यही है. One is the reciprocal of the other. ठीक है. From this equation, we can find the cos theta. What is the relation between sec theta and
cos theta, Shivang? Shivang, what is the relation between sec theta and cos theta? Shivang Kumar, relation between Ojas, relation between sec theta and cos theta. Yes, sec theta is the reciprocal of the cos theta. Cos theta and sec theta are reciprocal. So we can find the value of cos theta. What is cos theta? 1 by sec theta. So take the reciprocal. So 2p divided by, ये भी आ सकते प्रूव करने के लिए. जैसे कोई भी क्वेश्चन में गिवन होगा sec theta plus tan theta is equal to p. Prove that 2p upon p squared plus 1 equal to cos theta. तो ये अप्लाई करना है. क्लियर है? देखो एक ही क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन बना सकते सेम क्वेश्चन में से. क्लियर? मीन्स ये p is equal to sec theta plus tan theta given. Find the value of cos theta. What will be the answer? 2p divided by p squared plus 1. और sec theta reciprocal. P squared plus 1 divided by 2p. But here you want to find the value of sin theta. Na? Here you want to find the value of sin theta. So लिख दो. Identity use करो. Sin squared theta. What is the identity? Sin squared theta identity. Arush. Sin squared theta. 1 minus cos squared theta. Value put कर दो. 1 minus 2p divided by p squared plus 1 whole square. है ना? cos theta का value 2p upon p squared plus 1. Substitute the value. Substitute the value. Or 1 minus 4p square divided by p squared plus 1 whole square. Take LCM. P squared plus 1 whole square minus 4p square divided by p squared plus 1 whole square. ऊपर expand कर दो. That is sin squared theta a plus b whole square p raised to 4 plus Libby expand p squared plus 1 whole square expand plus 1 plus 2p square minus 4p square है ना ये वाला divided by p square plus 1 whole square. That is sin squared theta is equal to ऊपर p raised to 4 plus 1 plus 2p square minus 4p square. Garima? Plus 2p square minus 4p square. Minus 2p square divided by p squared plus 1 whole square. Clear? भारती यानी आइडेंटिटी है ऊपर न्यूमरेटर में चेक करो तो यानी आइडेंटिटी yes p squared minus 1 whole square p squared minus 1 whole square upon p squared plus 1 whole square. Yes, sin squared theta. Then what is sin theta? Square root. So take square root. So sin theta is equal to square root of p squared minus 1 whole square p squared plus 1 whole square. Square root के 12 है तो p squared minus 1 upon p squared plus 1. Clear है? Clear? एक और मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का. लिसन
एक और मेथड बताऊं मैं, ये तो वन मेथड है, इस मेथड से कोई भी वैल्यू हमको फाइंड कर सकते हैं ना, इस मेथड से कोई भी वैल्यू आपको फाइंड कर सकते हैं. मीन्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा. सेक थीटा इज इक्वल टू p squared plus 1 divided by 2p. Take the reciprocal, so we can find the value of cos theta, 2p divided by p squared plus 1. By from the cos theta we can find the value of sin theta. We can find the value of sin theta, that is equal to p squared minus 1 divided by p squared plus 1. एक और मेथड देखो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते. आई डोंट. सेकेंड मेथड, मेथड नंबर 2. 3 मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने के. मेथड नंबर 2, substitute the value of p in LHS. Take LHS first. Take LHS. P square minus 1 divided by p square plus 1. एग्जाम में कोई भी मेथड अप्लाई कर देना, ठीक है, कोई भी एक मेथड. Substitute the value of p. What is the value of p? Sec theta plus tan theta whole square minus 1 divided by, here also, p sec theta plus tan theta whole square plus 1. Now apply the identity a plus b whole squared. Apeksha, apply sec theta plus tan theta whole square. Apeksha, sec theta plus tan theta whole square. Sec squared theta plus tan squared theta 2 into sec theta into tan theta minus 1. Same way denominator. Sec squared theta plus tan squared theta plus 2 sec theta into tan theta plus 1. Plus 1. Missed it? Missed it. In numerator, to get identity, in numerator, to get identity, you have to combine you have to combine this minus 1 with which trigonometric term? Here minus 1 is there, na? Minus 1. You have to combine this minus 1 with which trigonometric term to get identity? Missed it. You have to combine with which term? Aryan Agarwal. You have to combine this minus 1. Here 3 terms, देखो, sec squared theta, tan squared theta, 2 sec theta, tan theta. फिर minus 1. You have to combine this minus 1 with which term? You have to combine this sec squared theta, sorry, minus 1 with which term? With which term? Riya Singh, with which term you have to combine? Wrong answer. Drishti. So we have to combine this with tan square theta. Which identity? Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. मेरा क्वेश्चन क्या है? You have to combine this minus 1 with which trigonometric identity, which trigonometric term to get identity? So tan square theta. So wrong answer. You have to combine this with a sec squared theta. Sec squared theta minus 1 is tan squared theta. So you have to combine this minus 1 with a sec squared theta. So sec squared theta minus 1 plus tan squared theta. Tan squared theta minus 1 is not
any identity, you know. Tan square theta minus 1 is not any identity. Sec square theta minus 1 is identity. Tan square theta plus 2 sec theta tan theta. In denominator plus 1. Plus 1, Prachi. You have to combine this plus 1 with which term to get identity? Eh? Yes, tan squared theta. 1 plus tan squared theta. No? 1 plus tan squared theta. So, it is sec squared theta plus 1 plus tan squared theta plus 2 sec theta tan theta. Sec squared theta minus 1. What is sec squared theta minus 1 identity? Tan squared theta plus tan squared theta plus 2 sec theta tan theta all divided by what is sec squared theta? Sorry, 1 plus tan squared theta identity. Sec squared theta plus sec squared theta and 1 plus tan squared theta plus 2 sec theta tan theta. In numerator, tan squared theta plus tan squared theta. What is tan squared theta plus tan squared theta? 2 tan squared theta plus 2 sec theta tan theta divided by sec squared theta plus sec squared theta. 2 sec squared theta plus 2 sec theta into tan theta. Clear? 2 sec theta into tan theta. In numerator, Akshita, in numerator which is common? Check the numerator and which is common? 2 and sec theta. 2 Sec theta. in numerator which is common? Sec 2 and tan theta. 2 and tan theta. 2 tan theta. Numerator become tan theta plus sec theta. Siddharth, in denominator which is common? Siddharth, in denominator sec theta. 2 sec theta. So, sec theta plus tan theta. Both are same. It cancel. 2 be cancel. So, my final answer tan theta divided by sec theta. But answer ये नहीं है. So, to get answer, तो actually next step. Yes, very good. Sin and cos. Now, how to convert? Tan theta. How to convert? How to convert, Toyashi? How to convert tan theta in terms of sin and cos? Manat, how to convert? Tan theta is equal to? Kanav, tan theta is equal to? Arush, tan theta is equal to? Sin theta by cos theta. Sin theta divided by sec theta. Arush Saxena. Sec theta. 1 by cos theta. Cos theta cancels. Answer is sin theta equal to RHS. This is another method. Clear? Ek method, one, apply the concept of reciprocal. Apply the concept of reciprocal. Next question. I don't know. If next.
if sin theta plus cos theta is equal to P, sin theta plus cos theta is equal to P, and sec theta plus cosec theta is equal to Q, is equal to Q. Show that Q into P square minus 1 is equal to 2P, is equal to 2P. Very simple. Take LHS and substitute the value. Take LHS and substitute the value. Take LHS. Q into bracket P square minus 1. Substitute the value. Ayush Nair. Substitute. What is the value of Q? What is the value of P? Substitute. Sec theta plus cosec theta, that is the value of Q, into bracket, next bracket, sin theta plus cos theta whole square minus 1. Okay. बट ऑलमोस्ट क्वेश्चन में क्या बोला तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस द कन्वर्ट आयुष कन्वर्ट 1 by cos theta 1 by sin theta bracket into expand a plus b whole squared. Ayush Hemant, expand a plus b whole square sin squared theta plus cos squared theta plus 2 sin theta into cos theta minus 1. Kavya, here take LCM, outside take LCM, this bracket, take LCM. LCM is cross multiplication. Sin theta plus cos theta divided by cos theta into sin theta, or inside the bracket. Any identity? Any identity inside the bracket? Which identity? Yes, sin square theta plus cos square theta equal to 1. No, this is sin square theta plus cos square theta 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1. Plus 1 minus 1 cancel. So it becomes sin theta plus cos theta upon sin theta into cos theta into 2 sin theta cos theta. Sin theta cos theta cancel. So this is equal to 2. And what is sin theta plus cos theta? What is sin theta plus cos theta? What is the value of sin theta plus cos theta? That is equal to P, equal to P. That is equal to 2P. Equal to 2P. Hence proved. Hence proved. Next, if tan theta plus sin theta is equal to M, and tan theta minus sin theta
equal to n. Prove that m square minus n square equal to 4 under root mn. 4 under root mn. Take LHS and substitute the value. Libby, take LHS and substitute the value here. Take LHS. M square minus n square. Tan theta plus sin theta whole square. Tan theta plus sin theta. Tan theta minus sin theta whole square. Okay. Expand. Tan squared theta plus sin squared theta 2 tan theta into sin theta. Okay. Bracket minus Karthik. Next. Tan squared theta plus sin squared theta tan theta sin theta. Tan theta sin theta. So Yash, open the bracket. Tan squared theta plus sin squared theta plus 2 tan theta sin theta minus tan squared theta minus sin squared theta plus 2 tan theta sin theta. क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं सुयश? Tan squared theta cancel. Sin squared theta cancel. So what will be the answer? 4 tan theta into sin theta. इसको हम सिंप्लीफाई के तो फायदे नहीं होते क्या ना, रूट हमें आंसर रूट में चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, टेक आरएचएस ऑल्सो, टेक आरएचएस. आई डोंट, ये एलएचएस हो गए, एलएचएस का आंसर है ना आरएचएस. शौर्य बताओ, 4 अंडर रूट mn value, substitute the value. 4 under root tan theta plus sin theta. Tan theta minus sin theta. Which identity we can apply here? ध्यान से देखो, a squared minus b squared, the tan squared theta minus sin squared theta, है ना, a plus b into a minus b, tan squared theta minus sin squared theta. बट आंसर तो हमारा चाहिए 4 tan theta into sin theta चाहिए आंसर. एक काम कर दो, tan को कन्वर्ट कर दो 4 in terms of sin and cos, तो sin squared theta by cos squared theta minus sin squared theta. ठीक है, that is 4 under root, take sin squared theta common, it becomes 1 by cos squared theta minus 1, that is 4 under root sin squared theta into, what is 1 by cos squared theta? What is 1 by cos squared theta? 1 by cos squared theta?
1 by cos squared theta, identity. Sec squared theta, sec squared theta. So sec squared theta minus 1. 4 into under root sin squared theta. What is sec squared theta minus 1 identity, Sanket? Tan squared theta. ये स्क्वायर है दोनों, है ना, रूट का बाहर लिख दो. सो आंसर इज 4 sin theta into tan theta equal to LHS. Hence proved. है ना, LHS सही है, देखो LHS 4 tan theta sin theta, ये भी 4 tan theta sin theta. So LHS equal to RHS. Hence proved. Next. Next question लिख दो. If x is equal to a sin theta, x equal to a sin theta and y is equal to b cos theta and y is equal to b theta. X is equal to a sin theta and y is equal to b cos theta. Find the value of x square upon a square plus y square upon b square. Direct question. Substitute the value. Substitute. Bhavya, substitute the value. Substitute the value of x. Riyansh, substitute the value of x. What is the value of x here? What is x square का value क्या होगा? Yes, a squared sin squared, दोनों का square करना. X squared upon a square plus y squared upon b square. That is a square sin square theta upon a square or y b square cos squared theta upon b square. A squared, b squared cancel. Sin squared theta plus cos squared theta. What is sin squared theta plus cos squared theta? 1. Say in the next question. I don't. If x is equal to a sin theta and b is equal to, sorry, y is equal to b tan theta. B tan theta. Then find the value of a square upon x square minus b square upon y square. Find the value of a squared upon x squared minus b squared upon y square. Find the value of this function. Priyanshi there? Priyanshi. Substitute the value. Kanika? Kanika. Substitute the value. Sir, a square A square. upon a square A square. sin squared theta. Sin squared theta minus Square b square
upon B square cos square theta. tan squared theta. क्वेश्चन देखो ना, tan squared theta, ठीक है, करेगा क्वेश्चन में ध्यान रखते। और कैंसिल किया तो a squared कैंसिल, b squared कैंसिल, 1 by sin squared theta, 1 by tan squared theta. What is 1 by sin squared theta? 1 by sin squared theta, Asida. Okay, cosec squared theta. Riddhi, 1 by tan squared theta. Riddhi, 1 by tan squared theta. Cot squared theta. Cosec squared theta minus cot squared theta. Minus cosec squared theta minus cot squared theta. 1 is equal to 1. Answer is equal to 1. Next question. I don't. X equal to R, small letter R, sin theta into cos phi. Y is equal to R sin theta into sin phi. Y is equal to R sin theta into sin phi. And Z is equal to R cos theta. Find the value of x squared plus y squared plus z squared. X squared plus y squared plus z squared. X squared. Substitute the value. Substitute. Ayush, substitute the value. Ayush Hemant, substitute the value of x, y, z. R square sin squared theta cos squared phi plus R square sin squared theta sin squared phi plus R squared cos squared theta. Okay. पहले क्या करना आप लोग? From the first two terms, or just from the first two terms which is common. First two terms में, 8 terms में, which is common. Yes, r squared sin squared theta common. अंदर cos squared phi plus sin squared phi, and this is as it is, cos squared theta. Or any identity? Or just any identity? Cos squared phi plus sin squared phi. Answer 1. So it becomes r squared sin squared theta plus r square cos squared theta. और कोई कॉमन है अगेन? सिद्धार्थ, कोई कॉमन है इधर? So take r squared common, bracket. Siddharth.
साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos squared theta. What is sin squared theta plus cos squared theta? 1. So answer is r squared. Answer r squared. Next question. Write down. लिख दो. If sin theta plus sin squared theta plus sin cube theta equal to 1. If sin theta plus sin squared theta plus sin cube theta is equal to 1. ये तो अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. Sin theta plus sin squared theta plus sin cube theta is equal to 1. Then find the value of find cos raised to power 6 theta minus 4 cos raised to power 4 theta plus 8 cos squared theta plus 8 cos squared theta. जो क्वेश्चन में जो गिवन है पूरा साइन में, जो हमारा क्या फाइंड करना है पूरा कॉस में फाइंड करना है. इसका मतलब जो गिवन है, जो साइन में गिवन है, उसका पूरा कॉस में कन्वर्ट कर दो. पूरा कॉस में कन्वर्ट. इसके लिए क्या क्या करना है ये सोचो. पहले बताओ, पहले सब में क्या कॉमन है? सब में क्या कॉमन है? Yes, so take sin theta common. So sin theta inside the bracket 1 plus sin theta plus sin square theta equal to 1. ये क्लियर है? ये क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट स्टेप. एक और काम कर सकते हैं इसमें. ये साइंस को देखिए शिफ्ट किया तो डायरेक्ट कॉस में कन्वर्ट हो गए ना. पहले वही कर दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगी. ये थोड़ा सा इजी होगा. फिर पहले एक काम कर दो, ये साइंस को थीटा इधर शिफ्ट कर दो. तो साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा. एक टर्म तो डायरेक्ट अभी कॉस में हो गई है ना. क्लियर है? ये कर सकते हैं ना. पहले एक टर्म को पहले कन्वर्ट कर दो. लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा कॉमन ले लो. अभी ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर्ड थीटा. 1 प्लस साइन स्क्वायर्ड थीटा है आइडेंटिटी कुछ? 1 प्लस साइन स्क्वायर्ड थीटा आइडेंटिटी है कोई? 1 प्लस साइन स्क्वायर्ड थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं है. 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा आइडेंटिटी है ना. व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा? कॉस स्क्वायर्ड थीटा. ठीक है, कॉस को. बट इधर हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर्ड थीटा को. राइट डाउन. साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड थीटा. हमारा ये में पूरा कॉस में कन्वर्ट करना. हमारा देखो आंसर में है ना पूरा कॉस में, उसी का आंसर फाइंड करना. इक्वल टू कॉस स्क्वायर्ड थीटा. ये आगे साइन थीटा इंटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर्ड थीटा. जब तक क्लियर है सबको? एक और प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास. क्या प्रॉब्लम है? साइन थीटा. हमको क्या चाहिए? कॉस में. बट आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर में होता है ना.
साइन स्क्वायर थीटा है तो है आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट ये साइन थीटा है. तो टू गेट साइन स्क्वायर थीटा हम क्या करने इसमें पहले, एनीवन टू, वेरी गुड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 माइनस cos squared theta whole square equal to cos raised to 4 theta. देखो दोबारा साइन स्क्वायर थीटा आ गई, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड थीटा. ये आइडेंटिटी यूज कर लो, ए माइनस बी होल स्क्वायर. आइडेंटिटी बताओ काव्या, अप्लाई आइडेंटिटी 2 माइनस कॉस स्क्वायर्ड थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 theta cos raised to 4 theta is minus 4 cos squared theta equal to cos raised to 4 theta. Now ये ब्रैकेट भी ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर लो, ये बताओ ब्रैकेट, कार्तिक बताओ ओपन करके बताओ, पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर cos squared theta से मल्टीप्लाई कर दो. 1 into 4 1 into cos raised to 4 theta, 1 into minus 4 cos squared theta. Next, minus cos squared theta into 4, minus 4 cos squared theta, minus cos squared theta into cos raised to 4 theta, minus cos raised to 6 theta, minus cos squared theta into minus 4 this, plus cos raised to power 4 theta equal to cos raised to power 4 theta. ये तो कैंसिल है, cos raised to 4 theta कैंसिल. इधर आ रहा है 4 हाईएस्ट पावर पर लिख दो, माइनस cos raised to power 6 theta प्लस 4 cos raised to power 4 theta minus 4 cos squared theta minus 4 cos squared theta minus 8 cos squared theta equal to 0. पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो. सो 4 इज इक्वल टू, ये आएगा cos raised to power 6 theta माइनस 4, माइनस क्यों, ये प्लस है, इधर शिफ्ट किया तो माइनस, ये माइनस है, उधर शिफ्ट किया तो प्लस, 8 cos squared theta. वही पूछा था क्वेश्चन में, देखो cos raised to power 6 theta minus 4 cos raised to 4 theta plus 8 cos squared theta. What is the value? What is the value of this? Equal to 4. Equal to 4. No, is equal to 4. Steps clear? Okay? Clear? Okay.